Mm-hmm. in a Okay. project to align the business Mm-hmm. to work for a business process, how Mm-hmm. an organization asset Mm-hmm. resources are to be Okay. utilized in a way so that we can save our time, Mm-hmm. save our costing, Mm-hmm. and do it in a way so that the project never got affected. Okay. Great. Great. Great, Miraj. And then Primavera Unifier comes into the fray. Okay. Great. Great, Miraj. Uh, Namita, do you have any view on Primavera Unifier? Just a glimpse in a brief. What do you know about Primavera Unifier? What is your understanding? Primavera Unifier is for the project management, and Mm-hmm. we can create BPs here and cost Mm-hmm. management. Mm-hmm. कॉस्ट Mm-hmm. मैनेजमेंट के लिए मेनली ये यूज होता है. ओके ओके ओके। करण, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, Unifier is a module by which we हम्म can transfer the data between P6 and other ERPs, and it is हम्म mainly for the cost part of the हम्म project. So cost part is integrated with the schedule part of the P6, हम्म and the data flows between हम्म both the applications through gateways and OICs, and it's हम्म used to manage the cost and हम्म। schedules of the project. Okay, great. Everyone great, and I think almost everyone has given good answers. But let me start Primavera Unifier from the very scratch, and they may be asked in your interviews also. Sometimes interval may go in the very scratch of the Primavera Unifier. Okay, so now I will go to the introduction of Primavera Unifier. Introduction of Primavera Unifier. Okay, so what is Primavera Unifier? So just write down everyone if possible. Primavera Unifier is a strong cost and contract management software. What is it? It's a means apart from cost and contract, it is being used for document manager and all these things. Okay, but the main motto of Primavera Unifier for implementation in any project or any EPC project or major project is for controlling the cost and contract. Okay, because for document also we are having different project like Acronex, and for scheduling also we are having P6. Okay, but this wherever unifier is implemented, it is mainly implemented for controlling of the cost management and contract management on the projects. Everyone clear? Okay, Yes. so just to understand, if someone will ask what is the major function of Primavera Unifier and why it is implemented mainly in, why anyone implement, okay, why any owner company will implement, just you need to tell, sir, Primavera is mainly or strongly implemented for maintaining its cost and contract during the project, during the execution of the project. Okay, so Primavera Unifier, okay, just a write short term, strong cost, strong cost and contract management BP, contract management software. Okay, okay. Now, so what are the things that it control? Like in cost, what are things it control? So in cost management, it control budgets, project budgets. Okay, its commitment मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ किसी वेंडर को, इन प्राइमरी इन यूनिफाइड टर्म, okay, we call it commitment. Okay, the award of a contract to a vendor, okay, is called commitment. We will see in much detail, okay, later, but just to understand what is commitment, it is a contract awarded to a contractor. Everything clear? Any doubt? No. Everyone? Okay, just No, tell no, yes no, or no. no, no. Yeah, just keep telling yes or no. Okay.
Okay, because I am going to ask you a lot of time. Yes, understand or not? I will ask you a lot of things. Time. Okay, just you need to say yes, no, yes. Let's keep telling. Okay. अवार्ड Okay. रिलेट आपने वापस रिपीट कीजिए अवार्ड टू When कॉन्ट्रैक्ट yeah, when a contract is awarded to a vendor, okay, or a contractor, then it is called commitment in term of unifier. Okay. ओके So now we have budget. In primary unifier, we mainly deal with budget. Okay. Commitment. Commitment. Okay. Change order. The all things will be asked in your interviews. Okay. I am teaching you in interview point of view. Okay. ओके So in cost control or in cost management, primary unifier mainly deal with budgets. Okay, what is the budget of your contract or commitment? The contract award to any vendor or contractor. Change order. If I will explain you in more detail later. Okay, payment application. Okay, payment application. Retention tracking. Retention. You can just tell the examples when if interview is occurring anywhere for you. Forecasting. Okay, so large EPC and infrastructure companies use this heavily for managing their cost and contract related issues. Okay, so I hope I hope up to this everyone is clear. Miraj, Karan, for you Yes. is it clear now? यस 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 Yes, clear. Okay. So I hope if someone will, if an interview will ask to Miraj, why unifier is necessary to implement in any project? We have a lot other software Oracle. Why unifier only is used? Okay, as a measure for costing. So I hope Miraj can be answer this, right, Miraj? Yes. Okay, fine, great. Now we will go a bit history of Primavera Unifier. So Namita, can you tell a bit more about Primavera Unifier? Like it's about how its origin and all. Do you have any idea? Namita, can you hear me? Okay, I think what happened. Namita is not here in group. Just a minute. Okay, I think she was having some problem with her internet or what. Maybe. मेरा Namita, can you? Yes. इलेक्ट्रिसिटी इशू है अच्छा अच्छा Okay. अच्छा अच्छा तो आप अभी सुन मतलब मोबाइल से कर सकते हैं क्या सिस्टम मोबाइल से हाँ हाँ मैंने मोबाइल से इंटरनेट दे रखा है इसको अच्छा ठीक है तो नमिता आई एम आस्किंग कि डू यू हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग यूनिफायर बेसिक लाइक यूनिफायर कैसे अपना इम्प्लीमेंट यूनिफायर कैसे अपना ओरिजिनेट हुआ हाउ अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ यूनिफायर just it all are Sir, interview question that Acha, I'm there is asking to one all. question that I am about to ask. When Yes, this tell me. unifier came into this world? Uh, Karan, for the same thing I am coming. Okay, on the same thing I am coming. I am going to give you detailed explanation about this. Just I want to know from Namita. Do you have any idea or shall I proceed, Namita? Just I'm asking. 2000 में स्टार्ट हुआ था आई थिंक Okay, Okay. okay, okay, okay. No, actually, let me tell everyone. Okay. And Karan, yours these are yours questions, so I will go a bit deep in that. Okay. So Karan, uh, actually before Oracle, okay, Primavera Unifier was earlier known as Esquire Unifier. It was okay. Hello, Karan, can you hear me? Hello, Yes, Karan. Ramdev, I can hear you. Yeah, yeah. Yes, yes. So it was Esquire tool. Skier. Okay. A1 minute. Let me write it down. Esquire. Okay. So as Primavera Unifier is a Esquire tool. Okay. Esquire tool of software. Esquire software. Okay. It is a US based company. Okay.
Hmm. It is a US based. US based company. Okay, US Hmm. based company. Okay, Hmm. it is US based company, and Oracle Oracle acquired Esquire Unifier in 2012. Okay, Hmm. Oracle acquired Oracle acquired Esquire Unifier in 2012. Okay, so Hmm. before 2012, okay, when it was when it was Esquire, when Unifier was Esquire's product, then its version one 9.7, like that only 9.7, 9.8. Okay, Miraj, Karan. Yes. Hmm. Okay, Hmm. so it was like that only 9.7, 9.8, 9.9. Okay, so initially it was a product of the Square, which was a US based company, and it has been acquired by the Oracle in 2012, and the version was 9.7, 9.8 earlier. Okay, before the Hmm. acquisition of Oracle. Okay, but Hmm. Okay. why it has been acquired by the Oracle, and what is the necessity of buying this software from Skyer into the Oracle family? The reason is because Oracle is having the planning tool, scheduling tool. Okay, it is having that one, but like P6 is a scheduling and planning tool. Okay, but Oracle does not have any cost controlling tool. Okay, contract management tool. So because it could not able to control any, it can able to for any project, or large project, Oracle can control its scheduling and planning tool, right, Miraj? I hope Yes. you can understand. If Yes, I'm. Miraj and Karan both are related to P6, so they can understand very well. And Hmm. what I mean to say is, earlier Oracle was just involved with planning and scheduling, and it has no any software to which he can deal the cost and contact management of the project. That's why he has acquired, as he has acquired Primavera Unifier from Esquire. Earlier Primavera Unifier is known as Unifier only. Okay, when it was when it was acquired by Oracle, it is known as Primavera Unifier. Okay, Oracle Primavera Hmm. Unifier. Okay, Okay. Hmm. so Hmm. before the acquisition of Primavera, its version was 9.7, 9.8, like that 9.9. So Oracle acquired Esquire in 2012. Okay, so Hmm. in 2012 it was Oracle acquired Unifier in 2012 with first version of 9.9.1. Okay, the first version was 9.9.1. Okay, so अगर आप अच्छा एक एक yes, बात tell me, प्रतीक बोलिए कोहली को रिक्वेस्ट प्रतीक कोहली भी आना चाह रहे हैं मीटिंग में Yes, हाँ please send बोलिए a बोलिए request बोलिए to बोलिए Pratik Kohli and I'll बोलिए admit बोलिए here. ओके फाइन फाइन उनका उनका मेल आईडी नहीं था. That is why I did not add him. ओके ओके वही लेट हिम कम हाँ हाँ बुला रही हूँ अरे यार आप मैं मुझे भी भेजो ना एक बार लिंक The mail that you are मेरा about to व्हाट्सएप पे लिंक forward. भेजो ना एक बार प्रति Okay, fine. Yes. अरे better you send in group na Miraj, better हाँ you हाँ send in group, it will be better. Why you are sending on mail? Just send in group so everyone having it.
Miraj, have you sent link to the group and is it informed to? Yeah, it is shared. Okay, okay, okay. मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी. ठीक है, ठीक है. Please join fast. Okay, let him come. Otherwise, again he will think that from where I have started. You know, if things are go on flow, then it's be nice. Otherwise, when flow will break, now then it's difficult to. Uh, Don't worry, if people who are genuinely willing to be a part of this meeting, they should suppose to send their email ID in the group, okay? So that I'll be mentioning everyone's mail ID and then sharing the link over WhatsApp as well. yeah. या फिर नेक्स्ट टाइम से मैं सबको ऐड करके भेज दिया करूंगी. You मेरे पास better, सबकी better, मेल आईडी. better you do it, okay? No issue. Okay, okay. Let's start. Yes. Let's start. Hi Pratik. Hi Kohli. प्रतीक कोहली जी आ गए हैं. ठीक है. ओके. सो हेलो प्रतीक जी. Hi, हेलो. hi. हाय हाय. ओके. सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्राइमरी यूनिफायर एंड द बेसिक ऑफ यूनिफायर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो द Unifier was, as we noted, Unifier was earlier a Square product, which is a US based company, and Oracle acquired Square in 2012, and the version when it was acquired by Oracle, the version was 9.9.1. Okay, thereafter the version has keep changing. Everywhere they are updating their version 9.10, 9.11, 10, and 15x. Right now, the current version is 25.12. Okay, so this is the current version that we are using. Everyone clear up to this? Is there any doubt? Then let me know. No, no, Karan, please continue. No, no, Karan no. and all? No, no. Okay. No, no. Okay, fine, fine. No, as I have already discussed everyone that in Primavera, okay, that in Primavera Unifier, okay, with Oracle, let's start with Oracle. With Oracle, we have a Primavera P6, okay, which is generally managed by the planning team, okay. और प्लानिंग टीम क्या करता है? हु डज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. ओके, राइट मिराज, यू आर द पार्ट ऑफ द Yes. प्राइमरी, सो यू नो बेटर. सो योर वर्क इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. ओके, बट देयर इज अ सेपरेट टीम हु डज cost control. Okay, we the separate team is done cost control. Okay, so what do you mean by cost control? Okay, and who manages the cost? क्योंकि अभी मैंने बताया कि P6 जो टीम है वो प्लानिंग टीम है जो प्लानिंग करती है, शेड्यूलिंग करती है. ठीक है, बट देयर इज ए सेपरेट टीम हु डज द कंट्रोल, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल. सो व्हाट कॉस्ट कंट्रोल टीम विल बी, मतलब वे क्या करते हैं? कॉस्ट कंट्रोल टीम किसे बोलेंगे? ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल टीम्स आर दोज हु अप्रूव बजट्स फॉर द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, मतलब मान लीजिए सपोज you want to build a 6-lane highway, so and you are the owner. ठीक है, मान लीजिए आपको 6 लेन एक हाईवे बनाना है, 6 लेन हाईवे बनाना है. ठीक है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, मतलब ये how Unifier is going to play the role. For that I am giving you the sketch कि in Primavera P6 we have the planning and scheduling team and we have a separate team called budget control team. ठीक है, तो नाउ सपोज कि हमारा एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, दैट प्रोजेक्ट इज वी हैव टू क्रिएट अ 6-लेन हाईवे प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इसमें हु इज द प्रोजेक्ट ओनर इसमें मान लेते हैं हु इज द प्रोजेक्ट ओनर, NHAI. जैसे हम बना रहे हैं तो हम NHAI हैं. ठीक है, NHAI इज द प्रोजेक्ट ओनर. NHAI स्टैंड फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना. ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, राइट. ओके, ये हम ये लोग प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे हैं. मतलब कि समझ लीजिए वो घर बना रहे हैं, जैसे मैं घर बना रहा हूँ, मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो भाई उसका मालिक तो मैं हूँ ना, है ना. तो मैं जिसको चाहे उसको प्रोजेक्ट दूं करने के लिए, भाई मैं रेट कॉन्ट्रैक्ट पे दे दूं या फिर डेली वेजेस पे दे दूं. सो इट इज माय विल हाउ आई वांट माय वर्क टू बी डन. ओके, एंड आई विल आल्सो डिसाइड कि भाई कितना खर्चा लगेगा इस घर को बनाने में. आई विल हैव माय ओन एस्टिमेशन. ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर से पूछने जाऊंगा कि भाई चलो तुम बता दो कि जितना पैसा लगेगा उतना पैसा तुमको दे देंगे, तुम घर बना दो मेरा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है,
I think Karan brother is in construction business, so he can understand better. ठीक है कि as a project Yes. owner, you gather your information, you do your prerequisite तो जो भी करना है आपको, and you will come to an estimation, भाई इतने में मेरा 2 तल्ला मकान बन जाएगा. So the same rate you ask your contact, भाई कितना रेट लगेगा, या फिर तुम खुद कोट कर दोगे, भाई इतना रेट है मेरे पास, तुम इतने में ये सामान डाल के घर बनाना, दो 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 मतलब दो होना चाहिए, इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, एक्सटीरियर ऐसा होना चाहिए, इतना बाथरूम होना चाहिए, ये टाइल्स होना चाहिए, एवरीथिंग यू जस्ट गिव योर ऑन. ठीक है. नाउ कॉन्ट्रैक्टर हैव टू डू कि भाई ये जो बता रहा है इस बजट में बनेगा कि नहीं बनेगा, ही हैज टू ट्रैक. ठीक है. राइट एवरीवन. Okay. The same thing we have to understand here also कि NHAI is the owner of the NHAI is the owner for 6-lane highway project that is going to be built. ठीक है. So you must should understand between the project owner and project contractor. ठीक है. वे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा. So here NHAI is the NHAI क्या है अभी बताओ नमिता. What is NHAI here? Owner in a Yeah, NHAI here is the owner. project owner. Yeah, they are owning the 6-lane highway. Okay. और center has given fund to build the highway. भाई center क्या काम है, उसने फंड दे दिया NHAI को. ठीक है. क्योंकि भाई तो तुम लो पैसा इतना लो. ठीक है. और तुम ये भाई मैं 6-lane highway बनाकर वो दे देना तुम. ठीक है. तो center has given them fund to build the highway. So NHAI will have the teams who will be working with the contractors, the road contractors. Like अब तो भाई हाईवे बनाना तो रोड कॉन्ट्रैक्टर पास ही जाएगा ना, है ना. बिजली बनाना पास थोड़ी जाएगा. ओके. सो द NHAI will have the team who will be working with the contractors. और कौन से कॉन्ट्रैक्टर पास जाएगा? They will go to the road they will go to the road contractors who have skilled in making highways. Okay. So suppose the NHAI has went to the contractors like L&T, okay, or any other big contractor. That can be anything. Okay. So now we understand, Namita, now we understand who is project owner and who is contractor. Okay. There is a person or you can tell a consultant between the project owner and contractor. Can anyone tell the name? What will be there between project owner and contractor? NHI is the project Product owner. owner. Okay. I have already told NHAI is a project owner. Okay. Okay. And L&T is the contractor. But in between but in between these, who is the person? Okay, there will be one more person who will be the Project manager or project planner. Okay, project manager. Okay. Now let me tell Pratik, do you know? Pratik, can you tell me which consultant will be there between these two? NHI is the owner, correct? Yeah, correct. NHAI being the client side, I guess NHAI is being assigned a task from the central government to make a 6-line, and then they assign these tasks to the other contractor. Yes. And consider L&T, Larsen and Toubro. So now L&T will assign the same task to other vendors. So accordingly, this will be like this. So central government to NHAI, NHAI to L&T, L&T to some other clients. Now these are the OBS, organization breakdown structure, which we are talking about. That is project manager, documents manager, documents controller. So these are the resources which we are supposed to use in a project, and where Primavera Unifier comes into the frame. That how these assets, how these resources, how these things will be managed. Okay. As far as I am concerned. Okay, fine. Pratik, up to yours, you are also correct. But let me explain my turn. Okay. So till that we have understand. For anybody, see why I am telling this, because learning software is not a big thing. Okay, you should know the things before knowing the softwares. Because if you go with client now, then the client talk to you in this language only. Okay,
अच्छा ये that at that time you must know their way of working, then only you can able to get the client, and it will be easier for the client and for you also to understand the transactions of words which are used in construction or any project. Okay, so let's start with the topic. So the here I am talking about the owner, that is the NHI. I have talked about the contractors which is going to work on that, and in between NHI and contractor there is a link which connect these two. It's called PMC. PMC means project management consultant. Okay, टीएमसी के मान लीजिए, अगर कोई मान लीजिए टीएमसी का क्या होता है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज. व्हाट देयर वर्क इज, देयर वर्क फॉर एग्जांपल क्या है कि हम हम क्या है एनएचआई, ठीक है, हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर पास तो जाएंगे नहीं भाई कि तुम ऐसा ऐसा काम करके मुझे दे दो, ठीक है. हम तो आईटी फील्ड बैठे हुए, हम आई नो नथिंग अबाउट द भाई रोड कैसे बनता है क्या होता है, आई नो नथिंग. मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ, ठीक है. नमिता अपना टेक्निकल बंदी है नहीं, ठीक है, हम लोग आईटी फील्ड के हैं. सो वी हैव जीरो नॉलेज अबाउट रोड कंस्ट्रक्शन. तो व्हाट वी विल डू ना, वी विल गिव द प्रोजेक्ट, वी विल गिव द होल सिनेरियो टू द पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट दे दूंगा. भाई देखो हमको ऐसा है, ऐसा ऐसा काम करना है, मुझे तुम 6 लेन का हाईवे बना दे दो. एंड पीएमसी हैविंग द experience as well as expertise in road construction or visualization of road construction from end to end and has been worked in several projects. ठीक है, तो PMC जो है ये L&D से काम कराएगा. I will come to that point. Okay, so now we have understand that okay there is a project owner, that is NHI. Okay, NHI is the project owner, and PMC is like Tata Consulting Services. TC is the PMC. Okay, and contractor are maybe general contractor, main contractor or subcontractor. Okay, I hope up to this things are clear for everyone. Yes. Yes. Okay. ये और ये सब जानते हो, ये आपको कब काम आएगा ना, कहीं बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है तब ये सब टर्म आएंगे आपको, ठीक है. लाइक ये पीएमसी है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर है. तो इसमें आपको पता होना चाहिए. तो बोले अरे यार क्या बोल रहा है, ठीक है, नए नए रहोगे समझ में आएगा नहीं. सो यू मस्ट नो दिस टर्म्स क्लियरली एंड यू नो देयर वर्किंग स्टाइल, हाउ डीपली दे आर गोइंग टू वर्क, व्हाट इज देयर वर्क. ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस. नाउ let me tell you the difference between these peoples, project owners. So project owner is the person who is owning the project, right everyone? Correct. Okay, okay. Government has given, suppose government has given me fund, मैं प्रोजेक्ट ओनर हूँ, गवर्नमेंट has given me fund of rupees 100 crore, ठीक है. या फिर मान लो कि करण इज द प्रोजेक्ट ओनर, या फिर वी एज अ टीम इज अ प्रोजेक्ट ओनर, ठीक है. हम लोग पीएमसी, हम लोग ये क्या है, हम एनएचएआई हैं, ठीक है. और हमको गवर्नमेंट ने 100 करोड़ के फंड दिए, मोदी गवर्नमेंट ने हमें 100 करोड़ फंड दिया, भाई तुम लोग को ये रोड बना के मुझे देना है, ठीक है. एंड इंस्ट्रक्टेड बाय ये गवर्नमेंट दैट वी वांट 6 लेन रोड, ओके, एंड यू हैव टू बिल्ड ऑन एनी हाउ. भाई 100 करोड़ जो दिया उसमें बनाओ, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, ठीक है. सो वी विल टेल ओके फाइन, एज वी आर गवर्नमेंट एंटिटी एंड आवर बॉस गवर्नमेंट इज गिविंग अस द फंड एंड वी आर द प्रोजेक्ट ओनर एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड दैट 6 लेन प्रोजेक्ट इन 100 crore. Is there any doubt up to this? Anyone, No. please? No. Okay. Miraj, do you want to say anything? No. Okay. So here I am acting as a, or we as a team is acting as a NHI, right? NHI. Okay. But what we all are? Do anyone having the experience of building the 6-lane highway? Tell me. We as a NHI or project owner, do we have any experience? Pratik, do we have any experience in 6-lane No. building? We don't have any experience, right? No. So No. we don't know. Like कोई भी तुमको बोका बना दिया भाई, 100 करोड़ 200 करोड़ में थमा देगा, ठीक है ना. So here we are acting as a NHI, but we are an IT guy, right? Who knows nothing about road construction, correct? And all. I'm not, like, we all are not aware at all. We are totally blind about, or we cannot visualize, okay, about road construction. So project owner or we are not aware about road construction. Everyone, right?
Yes. Okay. So Yes, what yes. project owner will do? भाई हमको तो आता नहीं है, लेकिन हमें तो 6 लेन हाईवे बनाना है, हमारा पैसा दे दिया, फंड दे दिया गवर्नमेंट ने, तो हम क्या करेंगे? What we will do? Now tell me, Namita, what you will do now? Suppose you have 100 crore in your bank account, okay, and you are the project owner, and someone I told you to, भाई नमिता तुम जाओ, हमको तुम 6 लेन हाईवे बना के मुझे दे दो इतना दिन में. Then what you will do with that 100 crore? Tell me, what's your view, Namita? सॉरी, मैं बीच में गायब हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे ठीक है, मिराज, व्हाट्स योर व्यू? हेलो मिराज. Being from the consultant side, like see, if NHA is being the owner of that project, owning 100 crores from the government to build a 6-lane road, and then we have been assigned, there is a bridge called PMC, Project Management Control, or Exactly, Project Management Consultant. Very good. So there is a bridge which is PMC, and here Unifier comes into the frame where it plays a crucial role. I guess, I'm not sure about it. Correct me if I'm wrong. And then Primavera Unifier comes into the frame where we cannot interact with everyone directly. With their Primavera Unifier will interact individually whether this person is the accountable for this role or not, and let's take it for let's take permission from this side, from this person, from this consultant, from this vendor. Then this will be considered as the key role, which is PMC, I guess. Okay. No, let's start. I will go in another way. Karan, up to this, is it clear to you? Karan, do you have any doubt? Let me know, please. No. Okay, No, fine. Rajiv. Okay, fine. Then we understand that project owner is not at all a pair. Namita, if you go out now, please let us know. जहाँ पे छूटा आपको बताइए, मैं I will repeat that because I want everyone to learn. Okay. Namita, नहीं, मैं can you पीएमसी hear पे us? ही पीएमसी पे ही मेरी लाइट चली गई थी। अच्छा, अभी लाइट आई गई है ना? सो अपन बात की है ना, पीएम आ गई ना? ठीक है। अभी आपको आवाज आ रही है? आ गई, बिजली आ गई। ठीक है, बिजली आ गई, चलो ठीक है। सो व्हाट वी हैव डिस्कस ना नमिता, वी हैव डिस्कस अबाउट कि हमारा 3 टर्म है। एक है हमारा प्रोजेक्ट ओनर विच इज एनएचआई नमिता, एंड आप बोलते रहिएगा, ठीक है? We have 3 term. First is NHI, who is the project owner, and the bridge between NHI and the contractor is the PMC, project management consultant, ठीक है? तो NHI जो है प्रोजेक्ट ओनर हो गया, और PMC जो हो गया, मान लीजिए कोई और हो गया, जैसे कि टाटा कंसल्टेंट हो गया, TCE हो गया, है ना? सो हमारा, तो मैं यही बता रहा था कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग, ओके, इन रियल लाइफ सिनेरियो. सो नाउ project owner is not at all, like we are an IT guy, we are not aware of the road construction from it, like road construction कैसा होता है, we cannot visualize it, ठीक है? लेकिन हमको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइडेड अ फंड ऑफ 100 crore, एंड दे आर टोल्ड अस कि भाई इस 100 crore में मुझे 6 लेन हाईवे चाहिए फ्रॉम समझ लो इलाहाबाद टू इंदौर और वट एवर इट इज, ठीक है? एंड वी हैव टू make it, okay, but we are having zero expertise, zero knowledge, zero experience regarding this. So what we will do, we will hire a प्रोजेक्ट PMC, project management consultant, और वो भी कोई भी हो सकता है, for example टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स, okay, like TCE, okay. Now project owner is not at all aware about the road construction. So what project owner will do? मैं यही क्वेश्चन अभी पूछा मैंने मिराज से कि मिराज, you are the project owner who has given 100 crore fund by the central government, and you are not at all aware how the road, how the NHI, or how the 6-lane highway will be constructed. So what you will do? So Miraj has given his view. Now I will explain. Okay. So project owner will do? Okay, they will hire a PMC. अगर इंटरव्यू में पूछा जाए नमिता कि सपोज नमिता, you are a project owner who is having zero expertise in road construction, okay, and you want to build this road, then what's your perspective in terms of Unifier, how you think of, okay? तो अब क्या बोलेगी, भाई मैं तो प्रोजेक्ट ओनर हूँ, आई विल हायर PMC, राइट? इन यूनिफायर और प्रोजेक्ट्स
the people hire PMC to interact or for construction, because PMC having end-to-end knowledge regarding road construction or NHI or highway constructions, and they are having expertise in that. ठीक है, and they have been work on multiple projects like that. ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन इंटरव्यू का? हाँ हाँ Yes. ठीक है, so these things you should keep it in mind, because these minor questions will be asked in interview where people get failed. ठीक है, ठीक है, ओके Okay. नाउ, क्योंकि आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे ना, तो यू विल नॉट जस्ट सिट अप विथ योर डेस्क एंड कीप ऑन द सिस्टम. ठीक है, यू हैव टू डील विद द क्लाइंट, वी हैव टू डील विद लॉट ऑफ मेजर कंपनीज और हायर कंसर्न, राइट प्रतीक? हेलो प्रतीक. Yeah, correct. Okay, fine. Thank you, Pratik. Okay, now please mute if because I'm getting noise. So this, मुझे आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? ये किसी ने म्यूट किया हुआ है. ठीक है. Project owner, okay. So project owner, as we have already told, please mute now. I am getting double voice in my head here. Okay. Project owner is not at all aware about the road construction. So what project management will do? What project owner will do? They will hire a PMC, that is project management consultant. Okay. Then what project management consultant is? Okay. So the project management consultant, that is PMC. For example, तो पूछिए क्या है, तो बोल देना टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज एंड अलॉट मोर देयर आर देयर, है ना. So a project management consultant is aware about end-to-end build of 6-lane road and have implemented similar project in the past. Okay, and and in the past also he has been awarded with this type of consultant as a PMC. Is everything clear? Yes. Yes, Clear? yes, yeah. Okay, fine. Let me know. Yes, yes. थोड़ा सा bit out, तो please let me know, because I can take time, but I want to give you clear explanation. ठीक है? Okay. मेरा नींद तो नहीं आ रही है ना? Okay. So No. Okay, fine. I would like to add here, like Accenture, Wipro, TCS. So these are the companies, organization working as a PMC, project management consultant. Correct? Okay. No, it Correct me if depends, I'm Miraj. wrong. It depends, Miraj. Okay, because see, they can act as PMC. Yes, you are right, but it depends also. Like they are getting projects from, like suppose someone is sitting in somewhere and he is the boss, and he will hire Infosys or anyone. So they want कि भैया आप PMC, as a PMC you assist us in having this project, और कोई सॉफ्टवेयर का हो कुछ भी हो, तो that things happen. Okay. I'm connecting this TCS and Wipro as a bridge. Like when government is taking any exam, let's say if it is UPSC exam, SSC exam, or any government exam, but they are conducting it online, correct? Now they Right. assign a person, assign a team, like Wipro, like Cognizant, or like any TCS, okay, to conduct that exam, and which mean that this will be considered as a PMC, project management consultant. No, because the project. Actually, Miraj, what I think na, Pratik, you should answer instead, that project always happen. PMC is the second person which act as a bridge. I think for these exams, I don't think any contractor is also involved. These or because things are given to someone which is a second party. I think there is no third party for exam conduct. Maybe they are doing everything by themselves. Leave this topic. This is maybe this is going in some other way. Yeah. Now Because please continue. I'm talking about engineering, construction, oil I'm and just gas. trying to clear that PMC Okay. term, because PMC term, project management consultant, No, is no, what? Like they take a okay. project from the government and then they hire a different team, maybe some different Listen, skilled person listen. to support. No, listen, Miraj. Suppose I'm giving one example. Okay. Suppose you have to build a house, simple house. Okay. You have a land, or you want to build a 6-story house. Okay. You will directly
not going to the contractor. You are going to someone who is consultant. He knows कि भाई अभी गिट्टी का रेट कितना चल रहा है, बालू का रेट कितना चल रहा है, 6 दिन बनाने में कितना पैसा लग जाएगा, कितना लेबर लग जाएगा, लेबर रेट कितना होगा, ठीक है. यू विल गो टू द कंसल्टेंट, राइट. और फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है तो क्या होता है भाई, बहुत सारा कंसल्टेंट खुला हुआ है, कंसल्टेंसी खुला हुआ है ना. दे विल गो देयर, ओके, दे विल कंसल्ट विद देम, भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है तो कितना फी लगेगा, क्या लगेगा, तो ही विल गाइड देम अबाउट एवरीथिंग, एंड ही विल ड्रॉप द गाइड टू द कॉलेज. होता है ऐसा. So he is acting as a Yes. mediator. Mediator. PMC means the mediator which is acting between the owner and the contractor for everything. What the owner will give access for everything. I will explain to you in the coming when we move ahead. ठीक है. लेकिन PMC Okay, समझ लो. okay. Thank you. For now PMC understand as a bridge between these two. ठीक है. करण आपको समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो आप भी. नहीं औरंगजेब ठीक है, समझ ठीक आ है. रहा साहब. हाँ, तो एक बार और मैं बता दूंगा. पीएमसी जो होते हैं ना, एक ऐसे बंदा है और एक ऐसा कंसल्टेंट है जिसको एंड टू एंड 6 लेन रोडवे हाईवे कैसे बनता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, और उसने सिमिलर प्रोजेक्ट पहले भी उसको मिला है, उसने किया हुआ है. ही इज हैविंग एक्सपर्टाइज इन दैट. ओके. सो व्हाट पीएमसी विल डू. अभी मेरा आपका क्वेश्चन आ गया, वो पीएमसी करेगा क्या. व्हाट पीएमसी विल डू. ठीक है, उसका काम क्या है. पीएमसी विल मॉनिटर द प्रोग्रेस. साइट पे काम हो रहा है. सपोज द प्रोजेक्ट हैज बीन, फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 6 लेन हाईवे, जो मैंने एग्जांपल दिया था, एंड द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड. ठीक है, रोड बनना स्टार्ट हो गया. तो भाई उसको देखेगा कौन. एनएचआई थोड़ी जगह देखेगा, बताओ मेरा. एनएचआई नहीं Yes. देखेगा ना. In that case, Yes, yes. PMC has been given the right, and he has been given the right of super user. Okay, उसको परमिशन दिया. He is acting as super user here. PMC will monitor the progress, monitor the construction, and he is the supervision. He will do the supervision. Okay. First job of PMC is to, अगर उसको हायर किया तो क्या उसको केवल कंसल्टेंसी के थोड़ी हायर किया कि हाँ बताओ मुझे, उसको सब कुछ करना है. ही विल एक्ट एज द शैडो ऑफ द एनएचआई. ठीक है, क्योंकि एनएचआई भाई तो वो तो राजा है, अपना मालिक है भाई, घर में बैठेगा अपना आराम से, भाई तुम मुझे ला के दो जो जो चाहिए मुझे, है ना. फॉर दैट ओनली ही हैज बीन हायर्ड. ठीक है. अब तुम अगर आप बोला जाए भैया कि मुझे अपना बाउंड्री कराना है घर का, ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई मैं तो अभी वहां पे हूँ नहीं, मैं तो भाई फॉरेन में बैठा हूँ. तो आप क्या करोगे, कंसल्टेंट हायर कर लोगे. भाई तू जा, इतने पैसे में तुझे देता हूँ, इतने पैसे में तेरा काम हो जाना चाहिए, तू ऐसा करा देना, रेलिंग फेंसिंग करा देना, ये कर देना, वो कर देना, ऐसा करा देना. तो आप किससे पूछोगे बताओ. अब आप जो कॉन्ट्रैक्टर में हायर किया उससे पूछो, मतलब कि जो रखा है, आप कॉन्ट्रैक्टर भी रखे हो. यू हैव हायर्ड द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो, यू हैव हायर्ड द कंसल्टेंट ऑल्सो. तो आप किसके पास जाओगे, जो जोड़ रहा है, या फिर उसको जाओगे जो जिसको आपने बोला है कि भाई ऐसा करवा के देना है तुम्हें. यू विल गो टू द पीएमसी. द पीएमसी वर्क इज टू, अब क्या पीएमसी क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो आपने हायर किया है वो मॉनिटर करेगा, भाई कितना बालू गिरा, कितना सीमेंट गिरा, कितना रॉड गिरा, कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है, मतलब जनरल बात बता रहा हूँ. ठीक है. फिर एक दिन में कितना दीवार उठा, है ना, up to how much meter length have been done. ठीक है, उसको सामने रिपोर्ट भेज दिया भाई. They will track the status of the project. They will keep track. They will do everything. They will do negotiation with the contractor. They will do tracking. Yes. They are the supervisor. I'm telling you, the project is 100% in the PMC hand, and in above the NHI and the owner, the contract handling everything with the PMC. Understand? Yes. ठीक है. ठीक है. तो अभी क्या है, प्रतीक, आर यू गेटिंग माय वर्ड. हेलो प्रतीक. Yes. आर यू गेटिंग मी. Correct. Yes, correct. Okay, correct. fine. That's what So, we are doing. Yeah. So, Karan, let me tell you one thing, and Miraj, what PMC will do. Yes. PMC क्या करेगा, क्या वर्क है उसका. भाई मैं इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ PMC, भाई वो तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है, अपना मैन मटेरियल लेवल कुछ लगा नहीं रहा है. They are giving consultant, but in what way they are giving consultant, that too we should know. Okay, if an interviewer will ask, okay, you are acting as a PMC for any company, okay Miraj, then what is your major work, what is your scope of work
for any project. Okay, so Miraj, for your understanding, let me tell you, PMC will monitor the first thing. PMC will monitor the progress, right? Namita, listen carefully. Namita, are you there? हाँ 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 Yes, हाँ yes. अभी लाइन नहीं जा रही है ना? चलो ठीक है. नहीं अभी नहीं जा रहा है चलो ठीक है. So हाँ the work of PMC will first work is PMC will monitor the progress, monitor the construction of road, how the road is constructing, monitor the material which is supplied at the site. They will act as a supervision. So this is the first work of PMC. Okay. Now the second work, what is second job क्या है? Second job PMC is cost control. उसको cost भी control करना है. Because और देखो अब cost control कैसे करेगा? ये भी देखो. मेरे को समझ लो, मेरे को एज ए PMC है, मतलब मेरे को जो है ना सेंटर कितना दिया है, मेरे को सेंटर ने दिया है 100 करोड़ दिया है, ठीक है. आई एज ए प्रोजेक्ट ओनर और आई एज ए NHI, सेंटर हैज गिवन बी 100 करोड़, राइट, फॉर दैट प्रोजेक्ट, फॉर 6 लेन हाईवे. ठीक है नमिता, वी एज ए प्रोजेक्ट ओनर हमको तो 100 करोड़ मिला है ना, लेकिन हाँ लेकिन हाँ क्या हाँ मैं 100 करोड़ दे दूंगा मैं PMC को? मैं 100 नहीं करोड़ दे दूंगा? नहीं. No, नहीं बचाएंगे Exactly, बचाएंगे 20%, 30% or whatever. exactly. You all are right. I as a project owner, NHI, government has given me 100 crore, but I will not give them 100 crore. I will only give them 50 crore. Okay, I will give PMC 50 crore only, and I will tell PMC to complete this job, that 6 lane highway project in 50 crore. 50 करोड़ ठीक है, समझ में तो आया ये आप तक? 50 करोड़ का झोल हो गया अभी. अरे तो यही तो होता क्या? है. अरे कंपनी अब तो चलानी अब है ताश के पत्ते सब कुछ शो कर दोगे ना तो कभी जीत नहीं पाओगे दोस्त. राइट. क्या बोले मिराज, क्या बोलो? ये 50 करोड़ का शुरू में ही झोल हो गया ये PMC के आने से. हाँ दिस इज हाउ रियल बिजनेस वर्क्स. आपके पास जितने, अब मान लो सैलरी आया पहला दिन, वाइफ बोल दी भाई कि चलो आज मार्केटिंग, पहला दिन ये 1 लाख कमा खर्चा कर दिया तो क्या होगा अगला दिन? Namita will not like this example, I know. Okay, fine. Okay, fine. So let's come to the topic. I hope Karan, are you getting now? Karan, Yes, Bhai, Aurangzeb, bhai. I'm getting it. I hope you are not sleeping. Are you enjoying the session? No. Okay, No, I'm fine. not sleeping. I'm just It's okay. hearing you all. So as a honor, I have given 100 crore for making a 6 lane highway project, but I will give only 15 crore to the PMC. मैं बोलूंगा भाई तू 50 करोड़ है, मुझे एंड टू एंड पूरा काम चाहिए, तू कॉन्ट्रैक्टर से लेकर सबका खर्चा, ऐसा नहीं कि इन दैट इट इज, उसमें उसका भी खर्चा आएगा, कॉन्ट्रैक्टर का भी खर्चा आएगा, मैन मटेरियल लेबर सबका खर्चा आएगा. आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स टू एक्सपेंड. ठीक है, दैट इन दैट ओनली यू हैव टू सेटल एवरीथिंग. ठीक है. नाउ देयर बजट. नाउ व्हाट इज द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट? अब कितना बजट है प्रोजेक्ट का बताओ? व्हाट इज द बजट फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन? नमिता, Miraj, anyone? yes. What is 50 the crore. budget? Yes, exactly, Karan. Very good. Karan is getting a lot. Okay. Now, the budget for project education will be 50 crore. अब budget with PMC कितना है? 50 करोड़ है ना? उसको 50 करोड़ दे दिए हैं. What they will do? Now, what PMC will do? PMC कौन है यहाँ पे? यहाँ PMC कौन है अपना? यहाँ PMC हमने हायर किया है टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स. ठीक है. तो वो क्या करेगा? दे विल डू प्लानिंग, रिसोर्स अपलोडिंग, शेड्यूलिंग, है ना, ये सब काम करेंगे. ठीक है भाई, वो देखना है ना कि भाई 50 करोड़ तो हमने माना है, लेकिन तो सब कुछ करना पड़ेगा. उसको तो पहले प्लानिंग कर ले भाई, हाँ ठीक है, ये काम है, इसमें ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल बनाएगा, रिसोर्स लोडिंग किसमें कितना रिसोर्स लगेगा. आई होप Karan and Miraj can understand, because this here it is P6. Okay,
all are P6 planning. Okay. Now what they will do? They will do planning, resource uploading, scheduling. So they will do what if analysis. मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लो बोला गया कि यहाँ पे 20 फीट गड्ढा और पता चला कि वहाँ 30 फीट कुछ और अंदर कुछ निकल गया, ठीक है. So they will do all the critical what if analysis, ठीक है. Okay, so they will do everything and come up with the plan कि ये प्रोजेक्ट 50 करोड़ में खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि मेरा 6 लेन हाईवे. ओके, अंडरस्टैंड. Yes. इफ द ऑनर विल गिव द पीएम से भाई तुम्हें 50 करोड़ में करना था, थोड़ी आग बंद बोलेगा हाँ सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ही विल डू सम व्हाट इफ एनालिसिस ना, वेदर ही कैन एबल टू डू और नॉट. इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑनर कि भाई तुम इतना काम करोड़ में कर दो. बट आई एज ए पीएमसी और नमिता एज ए पीएमसी और मेरा एज ए पीएमसी, ही विल नॉट कमिट डायरेक्टली ओके आई विल डू इट 50 करोड़. तो उसका कोई यकीन नहीं रखता है, ठीक है ना. तो वे क्या करेगा, वे अपना व्हाट इफ एनालिसिस करेगा. ओके लेट मी गिव सम टाइम. सो व्हाट ही विल डू, he is already having knowledge and all that things, so he will use his expertise and knowledge and team. They will sit and do the planning for the 610 highway. कहाँ से कहाँ तक का ये हाईवे बनेगा, what is the मतलब कि length of the highway, कितना breadth होगा, क्या होगा, what are the material that is required, ठीक है. सब कुछ वे लोग करके what are the resources that will be using, what will be the schedule for that. So and what is the what if analysis they will do. After that they have PMC come with the fact that okay this project can be done with अपना प्रॉफिट देखेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि 50 करोड़ में कर देगा, वो भी अपना प्रॉफिट निकालेगा अपना. So they will come with the plan yes this project can be done in 50 crore. Okay, that is 6 lane highway. So this is the work of PMC. Is current clear for you? What is the work of PMC? Yes. Okay, Yes, sir. okay, fine. Let me Yes. go a bit. Yeah, okay. Let me go a bit deep down. Okay, so this is the work of PMC as I discussed. They will do the supervision. वे क्या supervision करेंगे भाई, देखेंगे भाई. जैसे होता है ना कि हाँ ठीक है क्लास में प्रिंसिपल आ गया देखने के लिए कि कैसा टीचर पढ़ा रहा है ना. जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते रहे, प्रिंसिपल आ गया अच्छा टीचर, कोई बच्चा खड़ा करते बोला तुम बताओ तुम क्या जानते हो इस टॉपिक के बारे में. He will like sir I know this, sir I know that. Okay, in that way the PMC is, he will just go on site and check the materials, check the QA QC, check the working procedure. He will read all the documents. Okay, he will not go daily, but when he will go he will just audit for everything whatever the work is going on. Okay. 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 So this is the work of PMC. They do supervision. काम कैसा चल रहा है, काम बजट के अनुसार चल रहा है कि नहीं, है ना. बजट जो है उसने दिया है उस बजट के अनुसार काम चल रहा है कि नहीं, टाइम पे चल रहा है कि नहीं, वेदर इट इज ऑन टाइम और नॉट, वेदर द हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स आर फॉलोड और नॉट, राइट. बिकॉज हेल्थ एंड सेफ्टी उसको देखना है, बिकॉज प्रोजेक्ट कैन बी डिलेड इफ हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड, राइट. Yes. ठीक है, तो ये सब काम भी सुपरविजन करेगा. काम हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, वेदर द वर्क इज गोइंग इज इन बजट और नॉट, बिकॉज हम ट्रैक कर सकते हैं ईच डे हाउ मच द वर्क हैज बीन प्रोग्रेस्ड, हाउ व्हाट द बजट हैज बीन used till date, right. Miraj, I hope you can understand because you are physics guy. Yes. Okay, so they will also check whether QA QC is maintained or not, है ना, और quality of the materials is good or not or maintained or not. Material which is delivered on site is on time or not, or the material delivered or not on site. ठीक है, या फिर मटेरियल जो सप्लाई हुआ है दिस मटेरियल इज एज पर बीओक्यू और नॉट. जब अपन पीएमसी के साथ बैठ के मीटिंग किए तो उसने हमने उसको बीओक्यू दिया था भाई, और या फिर उसने दिया था भाई हाँ ठीक है ये बीओक्यू हो, बिल ऑफ क्वांटिटी हो गया कि ये कंपनी का ये लगेगा, मान लीजिए इसका ये लगेगा, इससे ये लगेगा, इससे ये लगेगा, ठीक है. एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन बीओक्यू. अकॉर्डिंगली द कॉन्ट्रैक्टर विल ब्रिंग द मटेरियल एंड ही विल यूज इट फॉर द कंस्ट्रक्शन. अब उसको अगर देखोगे नहीं, अगर पीएमसी क्या करेगा कुछ भी लगा देगा, है ना, जाएगा लोकल मार्केट से सरिया उठा लेके आएगा लगा दिया, है ना, उससे क्या है ना, गिट्टी कुछ भी ला देगा, है ना. सो एवरीथिंग हैज बीन रिटेन इन द बीओक्यू एंड it is the work of contractor to work according to the BOQ, है ना. But who will supervise it? The PMC will supervise. Okay, है ना. Okay. Okay. So all this responsibility of the PMC. Okay,
and they will act as a supervisor. That's why we call they act as supervisor. Okay. So Okay. अगर I hope up to this any doubt. We have talked No. about No. owner company. We have talked about PMC. I hope up to this any no doubt is there, right? Pratik, are you getting me Hmm. till that Yeah, till yeah. time? Yes, Okay, yes. fine. Yeah, yeah. Now we understand about the owner company. We understand about the PMC. Now भाई ओनर कंपनी जो घर में बैठा हुआ है काम देके प्रयास को देके उसको PMC को PMC has taken the whole responsibility that he will do supervision and all that things. He will check the quality. He will do the BOQ. He will see the site safety. He will do everything. But भाई काम कौन करेगा जमीन पे? वहां उतरे गड्ढा कौन खोनेगा? वहां पे गिट्टी कौन बिछाएगा? Who will do this work? Anyone? Anyone? Miraj? Resource करेगा ना? Yes. No, that is done by general contractor. Okay. अब ये जनरल अभी यहाँ रोल आ गया जनरल Okay. कॉन्ट्रैक्टर का. ठीक है. जनरल कॉन्ट्रैक्टर विल डू ऑल द इम्प्लीमेंटेशन वर्क. ठीक है. सो गड्ढा खोदना है जो करना है लाइक फिजिकल वर्क इज डन बाय द जनरल कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. ऐसा भी हो सकता Yes. है बट Okay. ऐसा भी हो सकता है कि करण आई होप यू गॉट इट. ठीक है. करण कोई डाउट है अभी तक? Karan? नहीं डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है. ओके फाइन. लेट्स गो अहेड. सो द थर्ड थिंग इज जनरल कॉन्ट्रैक्टर. सो हु विल डू द मेन वर्क? ये तो अपना तो सुपरविजन के लिए पीएमसी है, ऑनर है जो पैसा दे दिया, बट जमीनी पे काम कौन करेगा? दैट विल डन बाय द जनरल कॉन्ट्रैक्टर. ओके. सो अब जनरल कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है? व्हाट हैपन इन जनरल कॉन्ट्रैक्टर? जनरल कॉन्ट्रैक्टर विल डू द वर्क. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट हैव ऑल द एक्सपर्टाइज. जरूरी तो नहीं है भाई जनरल कॉन्ट्रैक्टर पर सारा एक्सपर्टाइज है ना? हो सकता है ना? सो व्हाट दे विल डू? दे विल बाय द एक्सपर्टाइज फ्रॉम द अदर्स कॉन्ट्रैक्टर. व्हाट्स प्रतीक वाज टेलिंग ना इनिशियली कि सब कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है प्रतीक, योर टर्म हैज कम नाउ. Yeah. So as see project has been from PMC and all, project has been allocated to L&T. Suppose project has been allocated to L&T. Okay, L&T is the general contractor here. But what happened now? General contractor does not have all the expertise for any work. Okay, so what they will do in that case now? They will buy some other workers or contractors. Okay, for some sort of work. Okay, और उस contractor क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर्स. सब कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर्स. ओके. आई होप यू पीपल गेदर द फ्लो. मतलब जो फ्लो है आपको समझ में आ रहा है ना? आई होप यू पीपल गेदरिंग द फ्लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके. Yes. ओके. Yes. नाउ थिंग्स आर गेटिंग सेफ कि भाई इंडस्ट्री में और बिग प्रोजेक्ट में काम कैसे होते हैं. ठीक है. सो अगर आप कहीं जाओगे ना, whenever you see whenever you go Dubai or anywhere you go in a big company na, you will listen these words like whenever you go and see like big projects, big buildings in Pune और कहीं जाओगे ना मुंबई, you will able to see all the names. भाई किसी बोलता है जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, ये अपना मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये अपना सब कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये पीएमसी है, ये सुपरविजन करता है. पीएमसी ऑल्सो नोन एज सुपरविजन कंसल्टेंट. ओके. PMC is also known as supervision supervision consultant. Okay, got it? Okay. Yes. और एक होता है प्रोजेक्ट ओनर जो कि पूरा देखो अब फ्लो समझ में आ गया. एक होता है प्रोजेक्ट ओनर Yes. जो कि पूरा Yes, प्रोजेक्ट yes, का yes. मालिक है. दूसरा होता है PMC जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट जो उस कंसल्टेंट करता है, प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, सुपरविजन करता है, विच इज ऑल्सो नोन एज सुपरविजन कंसल्टेंट. एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, उसके नीचे आता है सब कॉन्ट्रैक्टर. ओके. सो ऑल द थिंग्स वी कैन. जी बोलिए ना, बोलिए करण. औरंगजेब एक Yes, टर्म yes. और होता है पैटी कॉन्ट्रैक्टर्स का. पैटी What? कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है कि हम छोटा छोटा काम छोटे छोटे को दे देते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है. वो पैटी एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स का भी कंसेप्ट जो सब कॉन्ट्रैक्टर है ना करण, उसी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं भाई. मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर वो किसी सब कॉन्ट्रैक्टर काम दे देता है भाई, उसी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं. छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट देता है ना? हाँ हाँ हाँ.
है ना, उसी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर मतलब जनरल भाषा में इट्स नॉट अ टेक्निकल वर्ड, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जनरल टर्म, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट द Yes. स्टैंडर्ड वर्ड इज सब कॉन्ट्रैक्टर, ओके, जो ही कॉन्ट्रैक्टर नीचे काम करे, whoever it is, वेंडर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर, सब और कॉन्ट्रैक्टर, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। आई होप यू गेट इट करण, ठीक है, Yes, Swaranjit. ओके ओके। तो तो आई होप आप लोग को ऑल द टर्मिनोलॉजी समझ में आई है सर, बेसिक, ठीक है। Yes. नाउ हाँ हाँ And one question, Aurangzeb. So the yes yes stakeholders are the owner of the member of the owner company, correct? या स्टेक होल्डर्स, दो पैसा लगाएगा भाई, जो डायरेक्टर है तो सब डायरेक्टर बन जाता है, दो तीन डायरेक्टर बन सकता है एक फिल्म का, ऐसा थोड़ी एक ही रहेगा है ना। Okay. चलो ठीक है, विल गो अहेड, ओके। सो सो अब देखो, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा में थोड़ा बताना चाहूँगा सर, बिफोर गेटिंग इनटू यूनिफायर बैकग्राउंड, ठीक है। अब नाउ वी आर अबाउट टू एंटर इनटू यूनिफायर बैकग्राउंड, ठीक है। अब कैसे ये सब रोल प्ले करते हैं अपना सॉफ्टवेयर में। In construction project, let me explain a bit more about it. In construction project, these terms are related, okay, मतलब बहुत डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। लाइक जनरल कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर से बोलते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर इज अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वर्क। जस्ट यू अंडरस्टैंड दिस लाइन, ठीक है। GI, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं GI, ठीक है, या GC, सॉरी GC, वी कॉल इट GC इज द जनरल कॉन्ट्रैक्टर who is responsible for managing and executing the overall construction work. They usually manage labor, material, equipment, okay. PMC is not going to do these things. याद रखना what is the difference between the work of owner company, PMC and the general contractor. General contractor is the person or the company which is responsible for managing and executing the overall construction work, okay. PMC is doing the managing work and अपना जो प्रोजेक्ट ओनर है ही इज डूइंग द फंडिंग वर्क, ठीक है। तो अपना जो GI है, GC है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, दे यूजली मैनेज लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट, ओके। दे विल हायर सब कॉन्ट्रैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड पेटी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो करण ने बताया। दे विल हैंडल शेड्यूल एंड साइट कोऑर्डिनेशन, भाई शेड्यूल भी वही अपना हैंडल करेगा, साइट करेगा, बट इट इज ऑल दीज आर सुपरवाइज्ड बाय द PMC, है ना। And ensure the general contractor will ensure the project completion to be happen on time and that should be controlled by the PMC, okay। तो मेन देखो, अब क्या है ना, बहुत जगह ना इंटरव्यू में तुमको ना फंसान के बोल दिया, अच्छा टेल मी मिराज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड मेन कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या बोलोगे जनरल मिराज, बताओ। In interview they can ask, okay, what do you understand by the you are now going to work as a consultant for our team, okay, so you will have a chat with our clients and all. Suppose I will call you that better you go and talk with the main contractor, I will can tell with the go and talk with the general contractor, so how you do, where you go, so what is the difference between main contractor and general contractor, बताओ मेरा आज क्या बोल सकते हैं आप। Main contractor, general contractor. Main contractor will monitor the entire project, and general contractor will take care of the working area and will help to get the project done. But they will keep an eye. PMC, which is project management consultant, they will keep an eye on every activity done by the general contractor. Okay, now let me clear for everyone, please make it very clear from this day onward, general contractor and main contractor, both functions are same, okay, and both are same, okay, both are same. What is the difference? Main contractors common in इंडिया, यूके एंड मिडिल ईस्ट, इंडिया, यूके एंड मिडिल ईस्ट में मेन कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो है US एंड कनाडा में इनको जनरल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। एनी डाउट? Okay. US and Okay. Canada में if you go on if you go for a project for US and Canada, they will call you a general contractor, and if you go in any India, UK or Middle East, बोलते हैं भाई मेन कॉन्ट्रैक्टर यही है, we call it like that, okay। I hope you will not get confused later on, okay। Now
what now let's come to a summary of that. NHAI क्या है? NHAI is the project owner who have to build the 6-lane highway project, suppose from Delhi to Noida or any other location. After that, Yes. for which center has allocated a fund of rupees 100 crore. Now, what NHAI is doing now? They are hiring a PMC, that is project management consultant like TCE, Tata Consultant Engineers, and they have given them 50 crore, right? And they have told that in 50 crore we want the 6-lane highway from Delhi to Noida. Okay, and PMC what they will do na? They have to keep control on their costing, and they will hire another vendor. They will just, the company will hire the contractor, GC contractor or main contractor, and he will make them work. Okay, and he will track the budget, scheduling, health and safety, whatever it is. He will track. In that way, our project is going to be finished. I hope up to this is any doubt. Any doubt, anyone? No. Okay. ओके नाउ सपोज भाई इतना तो काम हो गया. अब भाई कॉन्ट्रैक्टर का आते हैं. तो व्हाट कॉन्ट्रैक्टर विल डू? कॉन्ट्रैक्टर विल डू डिटेल प्लानिंग. वे भी तो करेगा ना भाई. तो मुझे बोल रहा है कि मान लो 50 करोड़ उसको मिला, तो बोल रहा है भाई तुमको 45 करोड़ में ये काम को निपटा देना है, या चलो 45 करोड़ में से काम को निपटा देना है ना. वो बोलेगा कुछ तो अपना प्रॉफिट रख के. फिर ये बोला कि भाई ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर लिया, बोला कि अच्छा ठीक है 45 करोड़ ये बोल रहा है, ठीक है, तो कैसे काम होगा? या चलो 50 करोड़ बोलते हैं, मान लो 50 करोड़ में निपटाएगा. एंड सपोज फ्रॉम अदर वे ओनर कंपनी इज गिविंग मनी टू द, उसके पास ऑलरेडी बजट है ना, तो उसमें से उसको दे देगा पीएमसी को. लेकिन बोला 50 करोड़ में बोले उसको काम करने के लिए, ठीक है. तो ये बोलेगा अपना मेन कॉन्ट्रैक्टर के भाई यू हैव टू फिनिश द वर्क इन 50 करोड़. तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, ही विल थिंक ऑफ दैट whether this work can be done in 50 crore. तो वे अपना एनालिसिस करेगा. फॉर एग्जांपल the PMC has done his analysis, scheduling everything, resource uploading, and he has told the PMC, okay, this work can be done in 50 crore. The same thing he has offloaded to the subcontractor, contractor, main contractor, ki you have to do this work in 50 crore. Okay, then what exactly na contractor will do? He will also start day wise planning या वीक वाइज होता है ना. डे वाइज प्लानिंग करता है भाई, इतना दिन में, एक दिन में इतना काम करेंगे, एक दिन में इतना लेबर यूज करेंगे, यहाँ इतना मीटर काम करेंगे, है ना. दीज आर द रिसोर्सेज दैट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. इतना मिट्टी लगेगा, इतना बालू लगेगा, इतना ये लगेगा. ही विल डू डे वाइज प्लान. ओके, या फिर वीक वाइज प्लान करेगा, या फिर एक सप्ताह में इन अ वीक इतना लगेगा. ओके, दिस डिटेलिंग इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर. हाउएवर पीएमसी इज गोइंग टू रिव्यू इट. पीएमसी क्या उसको रिव्यू करेगा, अच्छा ठीक है तुम इतना इतना सही कर रहा है, ठीक है. ही इज गोइंग टू हेल्प हिम इन detailing the plan. Okay, here PMC will guide in planning of contractor. Okay, and PMC will review the plan for them and they will approve or reject. Understand? क्या हुआ? Yes. अपना कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर will go for the detailed planning for day wise or week wise. Okay, he will plan by whatever the money will be expended, whatever the labor will be expended, everything he will plan. In between, PMC have to make him work. Okay, so he will involve in that planning. He will help the contractor. He will guide the contractor for planning. He will guide the contractor and review the plan of it. And he the person who is going to accept or reject. First, if he will accept, because he has to make him work. PMC has nothing to do with that. Okay, so he will accept his plan or reject. Suppose now main contractor will tell the project. I hope everyone getting now. मतलब कि मिस नहीं हो रहा. Okay. Okay. So the main contractor will tell the project to be completed in 24 months. Okay. फिर क्या बोला? मेन कॉन्ट्रैक्टर बोला कि भाई मैं like suppose the main contractor has done his part of detailed plan, week wise plan. Okay. After all that thing, the main contractor बोला कि भाई I can finish this project, but everyone having his deadline. But what main contractor will tell, like उसको क्योंकि जमीन पे तो काम करना है. मिस्त्री बोलेगा ना भाई मैं 3 दिन में काम कर दूंगा, बोलेंगे अरे तुम 3 दिन मत करो, 2 दिन करके दो मेरे को. आप ऐसा बोलते हो ना? ओके, मेरा करंट ऐसा ही होता है ना. हाँ जी, औरंगजेब ऐसा ही होता है. हाँ, तो व्हाट हैपन ना, the main contractor will tell, जो मेरा general contractor और main contractor, what I am telling, just both are same, just don't get confused.
तो मेन कॉन्ट्रैक्टर विल टेल द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 24 मंथ। ये बोला भाई मैं 24 महीने में ही कंप्लीट कर पाऊंगा, बट पीएमसी विल नॉट एग्री, उसको रिजेक्ट कर दिया भाई, नहीं 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 इतना नहीं चलेगा, ठीक है। पीएमसी इंसिस्ट देम टू वर्क टू फिनिश द वर्क इन 20 मंथ। क्यों बोल रहा है? बिकॉज दैट डेडलाइन हैज बीन गिवन टू हिम बाय द ऑनर कंपनी, राइट। एनएचआई उसको बोला था 20 महीने में खत्म करना है, तो वे उसको बोल रहा है कि भाई देखो तुमको 20 महीने में खत्म करना है, 24 महीने में मत करो, ठीक है, 20 महीने में खत्म करो दो मेरे को। हाँ, हियर पीएमसी इज इंस्ट्रक्टेड बाय एनएचआई और बिग बॉस। एनएचआई इज द बिग बॉस ऑफ पीएमसी, राइट, फॉर द डेडलाइन, एंड पीएमसी विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। इज दैट क्लियर? ओके, ना पीएमसी को क्या बोला है कि भाई तुम हमको 20 महीने में कंप्लीट कर दो, पीएमसी को बोल कर रखा था, तो पीएमसी नीड टू बिल्ड दैट इन 20 मंथ। फिर ये 20 महीने से 22 महीने हो जाता है जनरली कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं ना, जो इफ यू वर्क इन रियल कॉन्ट्रैक्ट ना, तो 20 महीना बोल रहा था, लेकिन 22 महीने हो जाता है, ऊपर थोड़ा होता है, ठीक है। बट हियर दिस पीएमसी गाइज हैड टू कन्विंस द प्रोजेक्ट ओनर कि व्हाई यू रिक्वायर्ड 2 extra months, ठीक है। That has to be convinced by the PMC to the owner company, that is NHI. Everyone clear? अच्छा, हाँ देखो NHI क्या है ना, NHI क्या है, जो ओनर कंपनी होती है ना, वो एकदम मतलब एकदम बुद्धू होते हैं। दे हैव नो विजन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एजुकेशन एंड ऑल, ओके। उनका क्या, वो बोल देंगे कि भाई तुम 15 महीने में करके दे दो, ठीक है। उनको क्या है, वो तो बोल देंगे 15 महीने करके दे दो, बट इट इज द PMC who is having end-to-end project knowledge. He is going to visualize them, he is going to show them, भाई देखो ऐसे 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 these things are going to be work on, and accordingly we need to act, and this work cannot be done in 20 months, you need to give 2 extra months, ठीक है, right? Okay, fine. Now in that way the project has changed from 20 months to 22 months, ठीक है। Any doubt? Any doubt? Okay, okay. प्रतीक, मिराज, करण, कुछ बोलो, कोई डाउट है आप लोगों को? All good. No. Okay, fine. So अभी क्या है ना, I already have told you, PMC has given all the full supervision from site, from construction supervision in terms of QA QC safety, ठीक है। तो पीएमसी को सारे राइट दिए हुए हैं बाय द ओनर कंपनी। भाई तुम देख लो, फुल सुपरविजन है, तुम साइट देखो, तुम कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, सुपरविजन तुम करो, क्वालिटी देखो, सेफ्टी देखो, हैं, साइट पे जाओ, सेफ्टी देखो, साइट पे क्या इशू हो रहा है, साइट पे ज़्यादा एनसीआर तो नहीं हो रहा है। व्हाट इज एनसीआर? एनीवन? ये क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, सपोज व्हाट इज एनसीआर, व्हाट इज साइट पे का एनसीआर क्या होता है? नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। व्हाट इज एनसीआर? नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। These things you should just keep in mind, that's what I'm asking. What is NCR? The PMC will look for the site supervision, he will look for the NCR, है ना, साइट पे ज़्यादा NCR ना हो, है ना, मतलब ये सब टर्म आप सुनो है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो NCR क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। प्रतीक, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट NCR? व्हाट इज NCR? नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। Okay, fine. So typically NCR means if any issue found, मतलब सामने साइट पे कुछ इशू फाउंड हो जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या होगा? NCR हो गया है नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट, है ना। तो क्या होता है, कोई चीज़ मान लो कि कोई इशू हो गया, ठीक है, साइट पे, सपोज एनी इशू है ओपन ऑन साइट, ठीक है, तो उस पर इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होता है तो उस पर NCR रेज करते हैं। व्हाट इट इज? NCR, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, उस पर रेज करते हैं। मान लो सपोज अगर वे वेल्डिंग कर रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, तो वे अगर WPS जो है, मतलब जो वेल्डिंग का जो QA/QC के अनुसार जो उसको होना चाहिए, उस तरह वेल्डिंग नहीं कर रहा है, जो WPS बोलते हैं उसके अनुसार वेल्डिंग नहीं कर रहा है, तो क्या है, वे तो एक गलती कर रहा है ना। तो उस पर कोई इशू फाउंड हो गया, मतलब तो उस पर इंस्पेक्शन होता है, उसका रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, उसको करेक्शन किया जाता है, फिर उसको री इंस्पेक्शन किया जाता है, दैट इज फिर उसको NCR क्लोज होता है। NCR इज जस्ट नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट
जो कहीं मिलता है रिपोर्ट तो उस पर ऐसा किया था, मतलब कैसे बताऊँ, हाँ मान लो कोई एनसीआर मतलब कोई इशू फाउंड होगा, समझ कोई इशू फाउंड हो गया, मतलब कोई मतलब कुछ गलती कोई कर रहा है, वो इशू फाउंड हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, तब उस पर एनसीआर रहता है। जैसे मान लो जैसे हम लोग स्टैप में ना R02 रेज करते हैं, सपोज अ मटेरियल हैज बीन इशूड, सपोज अ मटेरियल हैज बीन इशूड टू द प्लांट, ठीक है, मान लो कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ठीक है, विच हैज बीन इशूड टू द प्लांट, ओके, बट वी फाउंड दैट after coming the cylinder to the plant, we found that there is some defect in the plant. So what we'll do, we will raise, ये तो इशू हो गया ना, इट इज इशू भाई, जब सिलेंडर काम कर ही नहीं रहा तो इट इज इशू। तो क्या है, हम लोग एक R02 रेज करते हैं, ठीक है, R02 बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको रेज करते हैं, उसका फिर एनालिसिस होता है, फिर उसको पार्टी आते हैं, उसको करेक्शन करता है, फिर करेक्शन करना, फिर हम लोग उसको इंस्पेक्ट करते हैं वेदर इट इज वर्क फाइन और नॉट, तब जाकर उस R02 को क्लोज करते हैं। इन दैट वे एयर एनसीआर इज देयर, इसको कैसे क्लोज करते हैं, जस्ट यू अंडरस्टैंड, मैं बेसिक के बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं। तो क्या होता है, जो अपना जो पीएमसी वे है, वे साइड पे जाता है, वहाँ का इशू कुछ ना हो सब चेक करता है, कोई एनसीआर ना हो, है ना, लॉस्ट टाइम इंजरी ना हो, सपोज किसी को इंजरी ना हो, दैट थिंग्स आल्सो डन बाय द पीएमसी, है ना। फॉर एग्जांपल देखो अभी क्या है ना, मान लो कंक्रीट टेस्टिंग हो रहा है, कंक्रीट टेस्ट फेल हो गया, तो इट विल अगेन डिले द प्रोजेक्ट, राइट। सपोज कोई कुछ टेस्टिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अगर अच्छा मटेरियल नहीं सप्लाई होगा तो इट विल गेट फेल, तो इट विल अल्टीमेटली हैम्पर द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द शेड्यूल, राइट। सो फॉर दैट पीएमसी विल सुपरवाइज एवरीथिंग। आई होप अप टू दिस क्लियर। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो मैं वही बोल रहा था, जो वेवर जो एलएनटी वाला है ना, एलएनटी अगर मान लीजिए एलएनटी को प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, ऑनर कंपनी ने बोला कि भाई तुझे 20 मंथ में करना ही है, ठीक है, तो एलएनटी बोला कि सीधे नहीं कर पाएंगे 20 मंथ में, क्यों, बिकॉज एलएनटी इज अ वेरी वेल रिनोल्ड कंपनी। उस वे बोलेगा कि भाई वी वांट टू मेंटेन आवर क्वालिटी एज ए लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, एंड we are known for our excellent work and we don't want to spoil our name, so the PNC will approve their contract or approve the project from 20 month to 22 month, okay, in consultant with the owner company, right? Any is it clear? Yes. Okay, अब जाके अब इतना कुछ जब हो जाता है ना, जब भाई हमारा जब for our project schedule has been finally cleared, our owner company has given 20 months, the PMC has told the duration of the project or schedule of the project 20 months to the contractor, but he disagreed and he has kept his word. Later on the PMC understand his situation and the detailed plan what he has done, he agreed and approved the 22-month plan in accordance with the ऑनर कंपनी। सो व्हाट, तो अब यहाँ पे बेसलाइन बनता है, नाउ द बेसलाइन विल बी क्रिएटेड हियर, द बेसलाइन। बोलिए और उनसे एक चीज पूछनी थी मेरे को। बोलिए। जैसे हम कोई भी प्लान बनाने से पहले सीपीएम मेथड यूज करते हैं, बैकवर्ड पास या फॉरवर्ड पास, यस। उससे डेट नहीं निकलती कि कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली मैं तो बोलता रहा हूँ ना, वही तो मैं बात करूँ, दे आर डूइंग डिटेल एनालिसिस, वो अपने स्तर पे करते हैं, दे आर डूइंग डिटेल एनालिसिस, दे कैन डू ऑन देयर P6, दे विल हैव, मान लो सब P6 हो या कोई और टूल हो, बहुत सारे टूल है ना, आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया, फिर P6 हो गया, लॉट ऑफ टूल्स आर देयर, दे आर हैविंग देयर मेथड कि भाई यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस है, दे आर कंटिन्यूअस वर्किंग ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स, सो दे आर हैविंग एक्सपर्टाइज कि भाई इतना दिन में ये काम होगा। देखो अपना P6 एंड रियल टाइम एग्जांपल बहुत डिफरेंट ना, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। क्योंकि बीओक्यू पे ही हमें मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो साथ में बीओक्यू भी मिलता है साथ में। नहीं एक्चुअली क्या है कि देखिए पहले कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका एक एस्टिमेटर होता है कि इतना दिन में खत्म करना, ऑनर ये सोचेगा ना इतना दिन खत्म करना है, फिर तो जिसको अलॉट है तो भी तो बताइए कि हम इतना दिन खत्म कर सकते हैं, फिर थिंग्स आर पुट अकॉर्डिंगली, द थिंग्स आर पुट इन P6 कि हाँ ठीक है ये मेरा लेआउट है, इसके अंदर P6 में डालो, राइट, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि हमारा बेसलाइन क्रिएट हुआ, हमारा बेसलाइन कैसे, आई एम टेलिंग नाउ द बेसलाइन हैज बीन सेट कि भाई इन अकॉर्डिंग टू 22 मंथ वी हैव टू सेट एवरीथिंग, ठीक है।
और उसके अनुसार अपना काम करना। नाउ द बेसलाइन हैज बीन सेट, तब हमारा बेसलाइन प्लान बनता है, राइट, एंड अप्रूव होता है फॉर 22 मंथ। देन उसके बाद देयर आफ्टर ओनली पीएमसी स्टार्ट्स मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन, और काम शुरू होता है एंड दे स्टार्ट वर्किंग। अप टू दिस एनीवन प्रॉब्लम, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? प्रतीक, नमिता, बताओ। नाउ द बेसलाइन हैज बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोजेक्ट, एनी डाउट? No. मिराज समझ में आ रहा है? मिराज आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग एवरीथिंग? Yes. प्रतीक, आर यू गेटिंग? हाँ प्रतीक, Yeah. यू आर गेटिंग राइट? नमिता, Yes, एनी yes. डाउट? No, no. ठीक है, तो हमारा बेसलाइन सेट हो गया एंड नाउ पीएमसी का रोल स्टार्ट हो गया। दे विल स्टार्ट मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूशन, काम शुरू होता है एंड दे स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, अब क्या होता है? ठीक, अगर देखो आप भी जब जाओगे ना, व्हेन यू गो फॉर द रिक्वायरमेंट गेटिंग ना, तो 90% ऑफ योर क्लाइंट विल गेट हैप्पी विथ यू व्हेन यू नो दिस टर्म्स एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू देम, कि भाई हाँ इस बंदे को आता है, यूनिफायर आता है, ही नो द एग्जीक्यूशन थिंग्स। ऐसा नहीं कि बस इसको सॉफ्टवेयर का, बिकॉज दे गिव जीरो वैल्यू टू सॉफ्टवेयर, ठीक है, दे गिव वैल्यू टू व्हाट यू स्पीक टू देम। यू नो हाउ टू कीप योर क्लाइंट हैप्पी। ये बोला अच्छा जीसी से बात करना, एमसी बात करना, ऐसा नहीं बोल सकते सर जीसी कौन है, एमसी कौन है, या फिर अच्छा ये क्या है ना। यू शुड नो द टर्म्स क्लियरली एंड हाउ दे आर गोइंग टू वर्क इन द रियल एनवायरनमेंट, यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। देन अब हमारा रोल क्या है? अगर हम P6 हम एज ए प्राइमरी यूनिफायर हैं, वी आर वर्किंग एज ए प्राइमरी यूनिफायर। नाउ व्हाट इज योर रोल? यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रोल एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो व्हेन अब क्या होता है, व्हाट इज योर रोल व्हेन यूनिफायर इम्प्लीमेंटेशन? तुम्हारा रोल क्या है व्हेन यूनिफायर इम्प्लीमेंटेड? अब क्या यूनिफायर इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें, तो व्हेन यूनिफायर इम्प्लीमेंटेड वी सिट एज ए, हम लोग कहाँ बैठते हैं बताओ प्रतीक? वेयर वी सिट एज ए व्हेन यूनिफायर इम्प्लीमेंटेड फॉर एनी प्रोजेक्ट, वेयर वी सिट एज ए पीएमसी, एज ए प्रोजेक्ट ओनर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, वेयर वी सिट? कैन यू टेल? As a PMC. Exactly, it depend, but when unifier it depend, but as a unifier when it is implemented we sit as a project owner, okay. Yeah, We sit correct. as a Yeah. project, Yeah. am I correct? Implement as a project owner, correct. Yeah. Yeah. This is also a tricky question in interview, better you mind everyone, okay. Yeah. So when unifier is implemented we sit as a project owner, you are acting as a NHI, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट ऑनर ही यूनिफायर इंप्लीमेंट करते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड इट। सारे प्रोजेक्ट, आई एम टेलिंग अगेन, सारे प्रोजेक्ट ऑनर ही यूनिफायर इंप्लीमेंट करते हैं। द सेशन विच आई एम गिविंग ना, नो वन इज गोइंग टू टीच यू दिस डेप्थ, सो बेटर यू गेट इट। हम बोल रहे हैं यूनिफायर, वेन एवर यूनिफायर इज इम्प्लीमेंटेड वी सिट एज ए प्रोजेक्ट ऑनर एंड द प्रोजेक्ट ऑनर इज द पर्सन हु इम्प्लीमेंट यूनिफायर, बस। तो प्रोजेक्ट ऑनर का जॉब देखो, तो प्रोजेक्ट ओनर जो जॉब जो इम्प्लीमेंट करता है ये कौन लोग करेंगे बताओ? ये हम लोग बैठ करेंगे, जो प्रोजेक्ट में काम है हम लोग बैठ करेंगे, ओके। दे विल डू द प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा भी होता है कि वे जैसे प्रतीक बोल रहे थे पीएमसी को देते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल फॉर यूनिफायर, ठीक है, लेकिन वी एज अ गाय विल डू द थिंग्स, वी विल डू प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल इन यूनिफायर फॉर द ऑनर कंपनी, ठीक है, यस एनएचआई। हाँ, सो आप क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल? एनीवन प्लीज, व्हाट डू यू? हम लोग यूनिफायर क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल के लिए बैठे हुए हैं। अभी इतना कुछ दिखाया अपना उस दिन प्रतीक ने, सॉरी पुलकित, हाँ पुलकित ने जो भी दिखाया, व्हाट सी एस सोन आर जस्ट अ कॉस्ट टर्म ओनली, हाउ ही इज गोइंग टू कंट्रोल द कॉस्ट, राइट अमिता? हाँ वो कैलकुलेशन भी कर रहा था साइड, सारा कैलकुलेशन प्रोजेक्ट। तो वी एज अ जी करा सीपीआई और एसपीआई प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल के लिए। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल? क्या समझते हो बताओ कोई?
Anyone? What do you mean project cost control? हमारा प्रोजेक्ट जो बजट है उससे कम, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो प्लांट बेसलाइन है, और शेड्यूल के अहेड नहीं होना चाहिए, शेड्यूल के पीछे ही होना चाहिए। Exactly. सीपीआई और एसपीआई लेस देन 1 होनी चाहिए। Exactly. So सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। exactly. कॉस्ट, Hmm. अच्छा, EV upon It, AC and EV upon This PV. will be used in earned value management. Yeah, yes. Okay, very good, great. Everyone having great knowledge regarding that. Okay, so we will now proceed ahead. Okay, so what is a project cost control in terms of unifier? So the first thing that is done in project cost control is first estimate is created. What is created? First estimate is created. Okay, form the budget. हम्म, Okay, सो एस्टिमेट पहले क्रिएट होगा, तब तो हमारा बजट फॉर्म होगा, देन बजट विल बी फॉर्म। ठीक है, ओके, हमारा इतना बजट लगेगा। ठीक है, देन वी ऑल दिस थिंग्स वी आर नाउ स्टार्ट डूइंग इन द यूनिफायर। ठीक है, सो फर्स्ट एस्टिमेट इज क्रिएटेड, देन बजट विल बी फॉर्म, देन बजट विल बी अप्रूव्ड बाय द फर्स्ट, इट इज अप्रूव्ड बाय, हाँ ठीक है, बाय द प्रोजेक्ट ओनर, हाँ ठीक है, ये अच्छा है, इन सुपरविजन विद द पीएमसी। पीएमसी सब जगह रहेगा। We are acting as a NHI, but PMC will assist for everything. हाँ भाई ठीक है, we are in consultant with PMC only. या फिर कभी कभी तो PMC, जैसे प्रतीक ने बोला, PMC ही करता है, he will hire his अपना बंदा जो यूनिफाई कंसल्टेंट। ठीक है, तो क्या है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, इन प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल द फर्स्ट थिंग इज एस्टिमेशन होता है। ये लाइन याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग इज, इंटरव्यू में पूछता है हाउ प्रोजेक्ट हाउ प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल इज डन। The first thing is that first estimate sheet is created, then budget is formed, then approve the budget, and once budget is approved, they will start doing the tendering process. Okay, and I hope what is tendering process? Tendering process क्या होता है, हम लोग टेंडरिंग करते हैं भाई, ये मान लो हमारा ये 6 प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड द साइकिल ऑफ, यस, तो उसमें हम लोग इनवाइट करते हैं। रिपीट। Okay, first of all, the estimate sheet is created for project control, for cost control. First estimate sheet is created. Once the estimate sheet is created, then budget is formed. Once the budget is formed, it is to be approved by the owner company in presence with the PMC. ठीक है, तो once budget is approved, they will start doing tendering process. Okay, they will start NIT. Okay, notice invitation tender. ठीक है, फिर होता है टीओडी, टेंडर ओपनिंग डेट। ठीक है, सो एनटीआर क्या बोला आपने? एनआईटी। आप ये छोड़ दो, अभी रहने दो, मैं समझाऊंगा बाद में, जस्ट समझो। स्टार्ट डूइंग द टेंडरिंग प्रोसेस बिकॉज दे नीड टू फाइंड द राइट वेंडर। ठीक है, टेंडरिंग प्रोसेस होता है ताकि उनको राइट वेंडर मिल सके। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं नोटिस इन्विटेशन टेंडर। ठीक है, उसके बाद देखो, दिस साइकिल फॉलोज एवरीवेयर। ये जो साइकिल होता है ना, ये जो साइकिल होता है, जो मैंने सबको बताया आप लोगों को, दिस साइकिल फॉलोज एवरीवेयर, ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोजेक्ट। ठीक है, इफ यू नो दिस साइकिल ना, यू नो एवरीथिंग, जान लो। ठीक है, once the tendering is done and the vendor who is going to, or the contractor, the main contractor, general contractor who will be finalized, who is going to work on the project, like L&T. Okay, like L&T will finalize हो गया. Once this will be done, they will be doing the commitment. Now in the starting itself I have told what is commitment. Once the vendor will be finalized, they will be doing the commitment. What it mean? Miraj, क्या हो गया, बताओ commitment तो क्या होता है? Yes. Award. Yes, what award? The contract commitment is the contract. Very good Namita, very good. I got you, very good. What do you mean by commitment? Commitment is the contract award. Contract award is the commitment in unifier. Okay, commitment means giving contract to the contractor. Yes, commitment means, Pratik, I hope you got it. Pratik? Yeah. Yes. Okay, so once the tendering is done,
vendor is finalized. Suppose the vendor L&T has been given the contract in unifier term, we called it commitment. Awarding of the contract is called commitment. Okay. Okay, contract award is a commitment in unifier, right? Now we understand what is project cost control. Okay, we understand. हम समझा कि estimate बनता है, budget form होता है, budget approve होता है, tendering होता है, vendor होता है, फिर commitment होता है ना? Any clear? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Please tell me now. I will go next. No. Okay, fine. Miraj, any problem? No. Okay, fine. Great, guys. Now, the second thing is contract management. Now, are you telling anything, Namita? नहीं. Sorry. Okay. Now, that's once the commitment is done. Now we will go for contract management. Now, how the contract is managed. ठीक है, contract management पे जाएंगे. Thereafter, change management process takes place. Okay, what is change interview? In interview, a lot of times you will ask what is change management process in Unifier. Then what is change management process? The extra calm, the extra work which is to be done by the contractor comes under change management process. I hope you got my point. The extra work or extra calm, okay, which has to be done by the contractor, which was earlier not in the scope and has been instructed by the PMC, and PMC is instructed by the owner company. भाई तू ये काम भी करना है इसमें. But when it comes to the floor in the scope of work, it is not mentioned in the contractor. तो बोले भैया ये तो एक्स्ट्रा वर्क हो गया. Thereafter we go for the change management. I hope you got it. What is change management, Namita? You got it? Yes. Okay, fine. नमिता सुन रही हो? Are you getting me, नमिता जी? हाँ मैं बोल तो रही हूँ, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है. स्कोप पे नहीं है, बाद में अगर उसमें कोई चेंजेस रहा या काम बढ़ा है या घटा है तो which will be considered as change management. Yes. Change management or scope creep. Exactly. Now I will go deep down. Earlier, I have given you example of 50 crore against the 6-lane highway construction. I hope everyone remember that. Earlier, I have given you example of 50 crore against the 6-lane highway construction. Now, ठीक है. अब NHA बोलता है here, NHA told PMC to finish the project in 50 crore. ठीक है. Now, NHA told the PMC कि भाई स्ट्रीट लाइट में लगाना है. वे बोला है कि भाई इसमें स्ट्रीट लाइट भी लगाना है. ठीक है, मुझे ये स्ट्रीट लाइट भी चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक कितने है ना. तो बोला कि फिर एनएचए सोचता चला कि ये तो पहले स्ट्रीट लाइट में बोला ही नहीं था. ठीक है. नाउ कॉन्ट्रैक्टर फिर अपना कंफर्म करता है अपना कॉन्ट्रैक्टर से कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर या फिर जनरल कॉन्ट्रैक्टर से बोलता है भाई आपको स्ट्रीट लाइट बनाना है. तो वह कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भाई द स्ट्रीट लाइट विच यू आर टेलिंग राइट नाउ इज नॉट इन आवर स्कोप ऑफ वर्क. ठीक है, हमको तो ये बोला ही नहीं गया है ना. So and according to our detailed planning, we cannot include street line in our work because it will give extra budget to the project. ठीक है, समझ में आया कुछ? ठीक है. आगे तो समरी क्या है? The owner company has requested for a change. Okay, the PMC got clarified from the contractor that this is part of the existing scope. भाई स्कोप में है क्या? ठीक है. तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वो अपना स्कोप में देखा कि भाई मेरे स्कोप में है क्या, तो ये नहीं है, लेकिन उसे कंफर्म करता है जनरल कॉन्ट्रैक्टर से कि भाई उसको तो नहीं दिया है. तो द जनरल कॉन्ट्रैक्टर आल्सो सेड दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ देयर वर्क. ठीक है ना, उसके स्पेस में नहीं है, उसके स्कोप में नहीं है. एट दैट पॉइंट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्टेड. व्हाट हैपेंड ना, that may be called potential change order, which is called as potential change order. जिसका बनता है क्या बोले, डायरेक्ट कॉल्ड पोटेंशियल चेंज ऑर्डर. क्या हुआ समझ में आया? ठीक है. जितना मान लो एनएचआई में जितना लाइट लगेगा ना उसका एक अलग से कॉस्ट बनेगा. सपोज जो करंटली द बजट इज
पोटेंशियल चेंज ऑर्डर। ठीक है, सो ऑन द सी अब क्या होगा इनिशियली हाँ so so what the general contractor will tell to PMC, if you want to implement, if you want to add extra for if you want to add lights on the on the highway, you we require additional 5 crore, ठीक है, because that is not in our scope। तो वे बोलेगा, जाके समझाएगा, पहले जाके PMC बोलेगा यार नहीं इतना, एक्चुअली इन रियल लाइफ इट्स नॉट एन इजी कि भाई बोला तो तुरंत मान जाता है। ए लॉट ऑफ नेगोशिएशंस डिस्कशन, पहले ये लोग बोले यार 10 करोड़ और लगेगा, ये बोले PMC अच्छा ठीक है, वो जाके बात करेगा ऑनर से, भाई तुम्हें कितने में करना बताओ, तो बोला नहीं मेरे को 3 करोड़ में करवा दो, ठीक है ये काम, तो बोलता ठीक है। फिर ये बात करेगा कॉन्ट्रैक्टर से कि बेटर डू इट इन 3 करोड़, ना ये लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, then finally a value will come in between, suppose 5 crore, and he will make agree to the owner company in 5 crore, he is going to add that one also, ठीक है। So in that time change management occurred, now the project budget has been revised from 50 crore to what is the 53 करोड़ 55 crore, okay ना 5 crore has been है ना 5 crore। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितना था, कमिटमेंट कितना था, ओरिजिनल कमिटमेंट 50 crore, 50 चेंज कमिटमेंट कितना हो गया, चेंज कमिटमेंट इज 55 crore, राइट। अब जब ये फाइनलाइज हो जाता है ना, नाउ कम्स द पेमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। you will be doing the payments in Unifier, okay। you will be doing the payment to the vendors, ठीक है, where vendors अगर 5% काम करता है ना, तो आप जैसे 5% काम किया, मतलब मान लो 1 महीना में 5% काम किया, 5% काम किया, तो यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक पेमेंट VP, ठीक है, पेमेंट VP हुआ विच इज टू बी अप्रूव्ड बाय द प्रोजेक्ट ओनर। तो क्या होता है, ये पेमेंट मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर है, पेमेंट लेके आया कि भाई मैंने इतना काम किया, अभी जाकर PMC दे दिया, PMC कोई बंदा बैठा हुआ ऑफिस में उसको दे दिया, बोला ठीक है भाई चलो तुम देख लेता हूँ, गया साइट पे गया, PMC guy will go on the site and check whether that amount of work whatever he is showing the bill which is giving to me, whether that much of work is done or not, he will go and check, हाँ ठीक है इतना काम उसने किया है, then he will approve it and the same he will give to the owner company, और आपको दे देगा, you are working as NHI owner, ठीक है, आपको दे देगा हाँ भाई इसको अप्रूव कर दीजिए, तो you will approve the पेमेंट फॉर दैट मंथ, ठीक है। अगर समझ लो कि उस वे 50 करोड़ का मतलब 50 करोड़ 55 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बट एंड हर महीने उसको 10 करोड़ देने हैं, तो समझ लो कि उससे वो बोला कि मैंने 5 करोड़ काम किया है, लेकिन साइट पे गया PMC बोला कि अरे तुमने तो उतना काम किया ही नहीं, तुमने 4 करोड़ का काम किया है, बोला तुम रिवाइज कर लो, तो अपना बिल को रिवाइज करके लाएगा फॉर 4 करोड़ एंड 4 करोड़ रुपीज विल बी रिलीज, ठीक है। सो इन पेमेंट एप्लीकेशन एज अ पीसीस कंसल्टेंट, ठीक है, यू विल डू रिटेंशन पेमेंट, ठीक है। अब क्या करिए, सब बहुत सारे टर्म होते हैं रिटेंशन तो क्या होता है, अगर मान लो हर महीना कॉन्ट्रैक्ट का बिल अगर 10 लाख का बनता है ना, 10 लाख का बनता है ना, तो उसमें रिटेंशन क्या होता है, 5% रिटेंशन रख लेते हैं, ये पैसा उसमें रख लेते हैं क्या, तो मान लो 9.5 लाख रुपया क्लाइंट को ही पे किया, 5% रख लिए, 9.5 लाख ही पे किए उसको, ठीक है। हम लोग रिटेंशन किसे बोलते हैं, जो ऐसा जो देखिए इन कंस्ट्रक्शन कंपनी रिटेंशन होता है, ठीक है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, ठीक है, a portion of the contract payment that the client temporarily keeps, क्या थोड़ी देर के लिए रख लेता है, थोड़ी देर के लिए, keeps to ensure the work is completed properly, and defects are fixed, ठीक है। अब पूरा पेमेंट दे दिया तो फिर उससे भी होगा ना, ठीक है, तो कुछ भी कर देगा ना, लास्ट तक कांट कर देगा। जैसे क्या होता है ना कि हरदम कुछ 5% कुछ कंपनी रख लेता है, उसको लास्ट में रिलीज करता है, ठीक है, जब ये काम सब अच्छे से कर देना तो उसको लास्ट में उसको रिलीज करता है। तो इस तरह ना द ऑनर कंपनी इज कीपिंग, उसका गर्दन ना अपनी मुट्ठी में रखता है, भाई
5% हर महीने खाते हैं इसका. So in that way we डरेगा और अच्छे से काम करेगा. That we call retention. Okay, retention is the portion. अब याद रखो, अच्छे से याद रखना. ये सब करना है अपन लोगों को, पेमेंट करना है, रिटेंशन करना है, इनवॉइस जनरेट करना, all that things will be done by us in the Unifier. ठीक है. So retention is the portion of the contract money that the client temporarily keeps to ensure the work is completed properly without any defects. ठीक है. For example, अगर बिल में 10 लाख का लेके आया है तो उसमें 5% रिटेंशन कर लेंगे. ठीक है. We will pay just 9.5 lakh to the client and 50,000 will be kept as retention which will be released once the project will be completed. प्रतीक, कोई डाउट यहाँ तक आपको? प्रतीक, करण, एनीवन? No. No. Okay. So this was our end-to-end study of the Primavera Unifier, how in real time projects are executed. We have initially we have introduced about the Primavera. ठीक है, कि initially ये स्कायर कंपनी का था, that we call Unifier, which was later acquired by the Oracle. ठीक है, and 2012 से फिर ये Oracle का हो गया, sorry Primavera Oracle का हो गया, which इन्होंने Primavera Unifier. ठीक है, we talk about the versions, we talk about the owner company, we talk about the PMC, we talk about the general contractor, and we talk about how things are going on in real examples, and we talk how where we work as a Primavera Unifier consultant in any project. So I hope you guys understand this class, and almost 2 hours completed. Now we have 7 minutes time. If anyone is having any doubts, we can discuss. Anyone, any doubt we can discuss, or shall I close the session? And please give your feedback now. This is the first class that I have taken. अगर मुझे कुछ सुधार करना हो तो let me know. From next classes I will try to make it a bit better in that field. जहाँ कोई प्रॉब्लम हो मेरे कुछ पढ़ाने में. नमिता, प्रतीक सीनियर गाई हैं भाई, अभी बताइए. नहीं. As of now, there is no issue. Are you about to send us this recorded session? Recorded session. Okay, from next class I will record. No, this आपने I guess recording we have recorded. कौन भी रहा? और ये तो मेरा रिकॉर्डेड नहीं शायद. ये पता नहीं. ये रिकॉर्डेड. Okay, I will see. Okay. Yeah. I don't remember. Maybe I don't know. Okay, I will see. I will send if possible. Okay. But you guys, if recording is there now, from next time you can take recording from the app. We can take recording. Okay. Next class से. ठीक है. ठीक है guys. And when is the next class? Next class during weekend. Will. Okay. Okay. And Pratik, if you have any real-time environment, na, you can also share something if you want. Do you have any theoretical things related to this session? No, actually, I don't have theoretical things. Actually, I myself has made some notes by my hands. Okay, for lecture. Otherwise, I don't have any theoretical. I have my own working experience, na. So through my working experience only, I have delivered all that things. Okay. No, what it's actually great. It's good. Yeah, what actually how we work in real life environment, and how we talk with the PMC or project owner. Okay, I myself acting as a client for many contractors, so what's my experience, so I have delivered all the things. Right? So when you work on real time project now, you will feel the same feeling what I am telling to you. Okay everyone, I think from next class will be on next weekend only, and if anyone else also want to contribute to it, then they are most welcome. Pratik, if you have any plan, you can also have a session. You can talk to the real environment if you have available. Yeah, okay. So I have shared one case with you. Have you gone through it, like the integration P6 Unifier integration? I wanted some help on that. Namita, do you have that case with you? नहीं, मेरे पास नहीं है कोई केस. Pratik has told that he has shared. नमिता को नहीं शेयर किया था, मैंने आपको शेयर किया. मेरे को शेयर किया था. प्रतीक. अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको. मैं अच्छा हमने व्हाट्सएप भेजा था, वेला बोल रहे हैं क्या? हाँ. अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ. एक्चुअली
थोड़ा सा बिजी वीकेंड था एंड लेट्स सी आई विल चेक वंस एंड कम टू यू बैक टू यू. Yeah, that is related to P6 unifier activity Yeah. sheet. तो उसको प्राइमवेरा से गेटवे, प्राइमवेरा गेटवे से उसको इंटीग्रेट करके हाँ वो थोड़ा ठीक है. ठीक प्रतीक प्रतीक ठीक है. प्रतीक प्रतीक सुनो ना प्रतीक सुनो ना या एक बात पूछनी थी कि बीआई पब्लिशर को इंटीग्रेट करते हैं आवाज ब्रेक हो रहा है तुम्हारा. क्या? इज इट मी ओनली? नो, इसकी आवाज, नमिता की आवाज ब्रेक कर रही थी. नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है. ओके नो नो The your session voice will is go breaking. off in the next 3 minutes, please. वो कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है. नमिता यू कैन जो बीआई अब आ रही है, अब आ रही है आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं ये पूछ रही थी बीआई पब्लिशर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं यूनिफायर के साथ में? यूनिफायर के साथ में तो बीआई पब्लिशर का एक अलग इंस्टेंस होता है, उसको भी डाउनलोड करना पड़ता है, मतलब कैसे होता है वो? हाँ वो पावर भी अलग है, बीआई पब्लिशर अलग है. मैं बीआई पब्लिशर का पूछ रही हूँ. बीआई पब्लिशर का वो भी अलग है, उसको भी वेबलॉजिक लगता है, उसको भी अलग इंस्टॉलेशन लगता है, उसकी भी अलग डेटाबेस लगता है. फिर वो डेटाबेस से वो जेडीबीसी कनेक्शन देते हैं हम लोग बीआई पब्लिशर में. तो जो अपना डेटाबेस बना हुआ है इसी से अपन कर सकते हैं? हाँ उससे कर सकते हैं. और उसका इंस्टॉलेशन अलग रहता है वेबलॉजिक का, उसका अलग से रोल्स देने पड़ते हैं वेबलॉजिक में. अच्छा प्रतीक, तो एक क्वेश्चन था, पावर बीआई पब्लिशर में क्या फर्क है? पावर बीआई मेरे ख्याल रिपोर्ट्स के लिए यूज होता है, राइट? हाँ मतलब दोनों एनालिटिकल रिपोर्ट्स के लिए यूज होते हैं. पावर बीआई ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, बीआई बीआई पब्लिशर में क्या पब्लिशर होता है? ओरेकल का टूल है. पर बीआई पब्लिशर के साथ में लिमिटेशंस है और पावर बीआई के साथ लिमिटेशन कम है, नहीं है उसके साथ? नहीं मतलब उसके लिए भी आपको वो डेटाबेस चाहिए दोनों को. वो एक ऐसे दोनों ओरेकल के प्रोडक्ट है, बीआई पब्लिशर और ये अपना यूनिफायर. तो उसके लिए कुछ आपको मतलब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करो हो गया. पावर बीआई में थोड़ा सा वो डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, तो उसको 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ते हैं, फिर वो जाके कनेक्ट होता है. क्लाउड रहता है तो वो पीडीएस करके कुछ रहता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसका भी. उससे हम लोग पावर बीआई को कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड का. ऑन प्रीमाइसेस का मैंने कभी किया नहीं कनेक्ट, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू कनेक्ट ऑन प्रीमाइसेस यूनिफायर टू पावर बीआई. ओके Okay. ठीक है. कुछ अगर यूनिफायर तो करेंगे हम लोग अगर, लेकिन अगर रियल टाइम सिनेरियो में कभी कभी हम लोग जाएंगे तो इंटीग्रेशन भी मेन रहता है कि इंटीग्रेशन से डेटा वहां से यहाँ कैसे No, फ्लो no, होता है. actually, Pratik, actually, we have planned now. Okay, we will go through the unifier. Apart from unifier, we will also go for Aconex and P6 and gateway integration and Power BI. We will go all through that with all our team, whatever we have. Okay. Yes. So initially we have started unifier ना. In between we will start Aconex also. उसका भी अपन पूरा एक्सेशन करेंगे. ठीक है. Gradually, my aim is that we as a team should grow as a Primavera, Unifier, Aconex, BI Publisher, Power BI, all that things for now, and integration and all whatever we have, we can just try our best to get all that things. And Miraj having a good contacts in Unifier and integration, and Namita also, and you too, Pratik, you yourself is there, who is a well experienced guy. So we will also have some professional class also. Okay, and just keep connected everyone. For everyone it will be better. Okay. Yes, that's Yes, correct. okay. Okay, fine everyone. Thank you, everyone. Everyone, thank you, and I hope everyone enjoyed the session. And मुझे Yes, लगता है शायद मेरा enjoy. रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे तो डाउट हो रहा है. ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ. ठीक है, हुआ होगा तो आई विल शेयर टू एवरीवन. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शायद मैंने किया था स्टार्टिंग में, ऑन नहीं हुआ, क्या पता नहीं चला मुझे. आई विल चेक वंस. ठीक है. ओके ठीक है. ओके, बाय बाय. Okay, thank you. बाय.